iPhone 14 leaks out for the display. In terms of design, they are doing something massive changes that never seen before. Apple is planning the biggest upgrade will upcoming iPhone 14, and again Samsung present major role to make it possible. iPhone 10 से iPhone 13 तक iPhone is using Samsung OLED display, and now according to analysts for the first time ever Apple is using an OLED panel with punch hole camera and LTPO refresh rate. Finally, iPhone is trying something new, so display is gonna be the best display. According to some useful sources, there are some inside detail. Apple will apply punch hole display in 2022. iPhone Pro models include iPhone 14 Pro comes with 6.1 inch and iPhone Pro Max comes with 6.7 inch, and non models वही current notch design के साथ आएंगे. Samsung is using laser cutting equipment to create the whole inactive area for punch hole camera display. As you know, Samsung is the master of OLED punch hole display, which is the world first brand to bring the OLED punch hole to the market, जो Galaxy 10 सीरीज के साथ आया था in 2019. तब से प्रोवाइड कर रहा है पैनल सारे मेजर स्मार्टफोन्स ब्रांड को, और अब iPhone 14 में आपको देखने को मिलेगा. बात करें स्पेक्स की तो एज सोर्सेज iPhone 14 comes with 8GB RAM in Pro and Pro Max. Currently iPhone is using 6GB in iPhone and might be go with 2TB in iPhone 14 Pro Max with all the new A16 Bionic chip जो iOS 16 के साथ नेक्स्ट जून में लॉन्च देखने को मिल सकती है. कैमरा सेक्शन में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन विद वाइड सेंसर जो 8K वीडियो विद 60 फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट कर सकता है, हाई रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी. इसमें कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिल सकते हैं लाइक कार क्रैश डिटेक्शन, सेम लाइक एज इन वॉच 7 सीरीज, फॉल डिटेक्शन टू कॉल इमरजेंसी नंबर. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर iPhone 14 Pro. आपके क्या थॉट्स हैं इसके डिस्प्ले कैमरा के बारे में और डिजाइन के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताएं. वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको स्मैश करके सब्सक्राइब कर दें. जस्ट गोना लेट यू नो, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट.